Good morning, students. Welcome back to the computer class. I hope you all are fine at your home. In the previous class, we have already discussed about the topic what do you mean by semantic tag and what are the purpose of these tags and why we use the attributes in our HTML language. Better now today we are going to discuss about to avoid the errors in our HTML tag what we can do. What do you mean by rendering in HTML? Why we use the text editors? What do you mean by web browser? And what we can do to view the code of our web page on the web browsers. So now we are going to discuss about these one by one. The first one is to avoid the errors in our HTML. What we can do? The first one, we will make sure that each and every tag should be written in an angular bracket and each and every tag should be closed by its slash, and we will make sure that each and every attribute should be surrounded in a double quotation marks. Means जो आप attribute की values डालते हो वो double quotes में होनी चाहिए. And the second one is which is the one of the most important thing is that you have to close the each and every tag by a slash. We know that it is not a case sensitive language. We will use the uppercase and lowercase letters also in our HTML language. And बेटा आपको जिस ऑर्डर में अपने टैग्स को स्टार्ट करना है सेम उसके रिवर्स ऑर्डर में आपको अपने टैग्स को क्लोज भी करना है. अगर आप अपने टैग्स को क्लोज नहीं करोगे तो योर कोड इज नॉट अ परफेक्ट कोड. वो परफेक्ट कोड नहीं माना जाएगा बिकॉज उसमें एरर्स होंगे. ठीक है. नाउ द सेकेंड वन इज व्हाट डू यू मीन बाय रेंडरिंग. रेंडरिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग ऑफ रेंडरिंग इज दैट इंटरप्ट करना, इंटरप्टिंग करना. Whenever we want to express something in an artistic form, we can say that it is called a rendering. जब हम अपनी informations को या किसी चीज़ को artistic form में means art की form में, graphics की form में present करते हैं तो that is called rendering. अगर web server की language में देखो तो we can say that in the language of web server कि वो हमारे HTML कोड्स के आउटपुट प्रोवाइड करता है. तो वो क्या कर रहा है? रेंडरिंग. द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर HTML इज दैट whenever we want to parse our HTML code on the web server means वो क्या कर रहा है? पार्सिंग का मतलब पास कर रहा है हमारे HTML कोड को वेब सर्वर पर. फिर हमारा वेब सर्वर हमें HTML का आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है. सेम एज इट इज इन द केस ऑफ वेब ब्राउजर. वो क्या कर रहा है? हमारे प्रोग्राम को रन करने में हेल्प कर रहा है और हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है और हम किसी भी वेब पेज का कोड देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर. एंड वी नीड अ वेब ब्राउजर टू रन our HTML codes because without the web browser we can't run our HTML codes. हम अपने HTML programs को run ही नहीं कर सकते without the web browser. So it is most important कि web browser बहुत ज़रूरी है. HTML programs को हम run ही कहाँ करते हैं? On web browsers. Now what are text editors? Text editors क्या होते हैं? Text editors give us the platform to write our code. वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां हम अपने HTML कोड्स को राइट करते हैं. जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने हमें नोटपैड प्रोवाइड किया है अपने HTML टैग्स को इजीली लिखने के लिए, इजीली राइट करने के लिए. सेम एज इट इज एप्पल ने क्या किया है? एप्पल मैक ने हमें क्या प्रोवाइड? एप्पल मैक ने हमें टेक्स्ट एडिट प्रोवाइड किया है सेम एज इट इज नोटपैड की तरह अपने HTML प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए. नाउ द वेब ब्राउजर्स. व्हाट आर वेब ब्राउजर्स? वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं? वेब ब्राउजर्स जहां पर हम अपने HTML कोड्स को रन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ वेब ब्राउजर. मोज़ोरोला फायरफॉक्स इज ऑल्सो अ वेब ब्राउजर. Now we are going to read from our book how we can view our HTML codes of the web page on web browser. Now the next one is to view the HTML code in a browser. What we can do? You can view the HTML code used to create a web page of your choice.
First of all, viewing the HTML from the different website is a good way to learn how to write your own codes and get the new ideas from your own pages. See, this is your web browser. Yahoo is your web browser. Okay. And now on this web browser, you have to open any page, which is your called web page. And to see the code of that web page, you have to start the web browser first that you want to use it. In this example, we have started the Microsoft Internet Explorer. Beta, this is the way to see your web page code on the web browser. So these are the steps which are already given in your book. And the second one is open the web page for which you want to view the HTML code. फिर आप उस web page को open करो जिसका आप HTML code देखना चाहते हो. Then press the Alt key from the keyboard. फिर आप अपने keyboard से Alt key को press करो. Then after that, click on menu bar will be appear on your screen. Then click on view the menu and click on source क्योंकि आप अपना पेज का कोड देखना चाहते हो. A window displays the HTML code used for creating the web page. After that, you have to view the HTML code, and after viewing the HTML code, click on cross to close the window. This is the way to see the code of your web page on the web browser. Now, this one is the format to create the simple web page. जैसा मैंने आपको बताया था, these are called semantic tags. Now, हम इसमें क्या देखेंगे? How we can create the simple page by using these tags. First of all, मैंने आपको बताया था, you have to create the doc type which tells the web browser कि in which type of language your page will be written. Then after that, you have to start the HTML tag within the angular brackets. Then head and title which shown in the front of your page. See, for example, the computer is your title of the web page, and you have to close, after creating the title, you have to close the title tag with the slash, same as it is close the head tag. Then after that, the body tag, it also should be written in an angular bracket. The meaning of body tag is that बेटा जो आपके pages का content है, this is the main part of your HTML code जहाँ पर आप अपने contents को लिखोगे. After writing the contents, you have to close the body tag, and in last close the HTML tag. Output कैसे आएगा? The heading of your page is your HTML is computer, and after that the content should be written here. And the one of the most important thing जो हमने discuss करी थी, you have to save the file of your HTML code with the HTML extension or the HTML extension like this. Your name of file, the file का name क्या है? Class 7, and .html is your extension. So this is the way to create your web page.